Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the techniques of Satyagraha, right? First we studied about the civil disobedience, right? Then we studied about the non-cooperation. Gandhiji was of the opinion that injustice prevails in the society only when both the government perpetuates and the people extend their cooperation. Once this cooperation is withdrawn, then the entire system paralyzes. It is widely accepted that even the most despotic leader cannot continue for long if it lacks the consent of his subject. Then the main goal of non-cooperation is to strike the imagination of people as well as the social ostracism or dictating. Hartal could be occasionally used based on the non-violence and voluntary measures. The social ostracism is a kind of social boycott against those who deny public opinion. Gandhi suggested, in a limited sense, dictating as other people that relies on the force of public opinion. Then boycott. The basic object of boycott is to cause a breakdown of law and order in a peaceful manner, and thereby by convincing the governmental authority that the satyagrahi will not be the partner in the wrongdoing. Mahatma Gandhi had used the technique of boycott in different situations both in India as well as in South Africa. Then Hazrat. One of the main reasons for the people to restore to Hazrat is when they feel oppressed either due to loss of self-respect or honorable living. They attempt to migrate permanently to other place. Gandhiji suggested this measure to the Harijans, mainly due to their oppression, especially by the dominant classes in some place. The Chaura Chauri incidents prior to independence were a valid example of the Harijans and the Dalits who have taken the route of permanent exile as a form of their protest. Hazrat is therefore another non-violence method of protest that attempts to make the oppressor realize his inhuman and unjust act of behavior against the poor, the weak, just and innocent people. Then fasting. This was another strong weapon suggested by Gandhiji in his non-violent struggle for freedom. He stated that unwarranted use of device would lose its importance, and for this reason he suggested that it must be sparklingly used. Gandhi was of the opinion that those who are spiritually fit and have purity of mind and thought, humility, discipline and faith should alone undertake fasting. It should not be viewed as a physical stamina. Therefore, Gandhiji suggested that the technique must be used with great caution and resistance. Then the next point is the strike. The last device a satyagraha uses is the strike, demanding justice for legitimate cause as well as the redressal of grievances. Strike is considered a voluntary suffering undertaken for the transformation of the erring opponent. Gandhi was not in favor of Marxist principle of class war and forceful taken over of the means of production from the bourgeoisie. A strike is meant to end injustice, insufficiencies, corruption and short-sightedness of the capitalist. However, in strike, adequate care has to be taken to ensure that it remains non-violent as well as peaceful and makes their demand meaningful, just and feasible. Then types of satyagraha. First is the hartal. It is the stoppage of work with the view to demonstrate, protest and draw the attention of public on a certain issue. Then picketing. Another technique of satyagraha is peaceful picketing, by which socio-political pressure is used against the government to force it to do justice, and that at the same time political consciousness is aroused among the masses. While using this technique, the satyagraha were required to use their speech in the most gentle and inoffensive manner. Then Hazrat.
दिस फॉर्म ऑफ ये जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, भले ये एक टेक्निक थी बट बहुत कम पॉपुलर हुई थी ये. देन फास्टिंग, इट शुड बी अंडरटेकन ओनली व्हेन one is thoroughly convinced of the rightness of one's stand. It should be used as a last resort and never for personal gain. Then moving forward, the basic percepts of satyagraha. There are three basic percepts essentially to satyagraha. See, तीन basic percept है सत्याग्रह के लिए. First is the truth, non-violence, self-suffering. These are called the pillars of satyagraha, which describes as follows. See, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? These are called the pillars of satyagraha, which describes as follows. First one is the satya, यानी truth. First one क्या है? सत्या है. सत्या यानी truth. Satyagraha as stated before, literally means truth force. See, सत्याग्रह जैसे अपन ने पहला बोला था, लिटरली मीन्स ट्रुथ फोर्स. ट्रुथ इज रिलेटिव. मैन इज नॉट केपेबल ऑफ नोइंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ. सी, ट्रुथ क्या है? ट्रुथ इज रिलेटिव. और मैन क्या है? मैन इज नॉट केपेबल ऑफ नोइंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ. सत्याग्रह इम्प्लाइज वर्किंग स्टेडीली टूवर्ड्स अ डिस्कवरी ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड कन्वर्टिंग द अपोनेंट इनटू अ ट्रेन इन द वर्किंग प्रोसेस. मैन क्या है? मैन इज़ नॉट केपेबल ऑफ नोइंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ. इंसान में इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो पूरा सच जाने, अच्छे से जाने. तो सत्याग्रह क्या करता है यहाँ पे? ये धीरे धीरे ट्रुथ को क्या है अच्छे से जानता है और फिर सामने वालों को भी समझा के देता है ये एक्चुअली ये सच है और आप जो ये कर रहे हो वो गलत है. what a person seeks as truth may just as clearly as untruth for another. See, what a person seeks as truth. See, जो इंसान सही समझता है may be as clear be untruth for other. See, वो भले खुद के लिए सही हो बट दूसरों के लिए सही होना ज़रूरी नहीं है ना. आज जो मेरे लिए सच है वो आपके लिए सच है क्या? नहीं, आपके लिए गलत भी हो सकता है. Gandhi made his life a numerous experimental with truth. See, गांधी जी ने क्या किया? Made his life a numerous experiments with truth. गांधी जी ने उनके लाइफ में सच के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हैं. In holding to the truth, he claimed to be making a ceaseless effort to find it. See, जब वो ये सच समझ रहे थे, he claimed to be making a ceaseless effort to find it. Gandhi's concept of truth is deeply rooted in Hinduism. See, Gandhi's concept of truth क्या है? It is deeply rooted in Hinduism. The emphasis of Satya, truth, is paramount in the writing of the Indian philosopher. See, the emphasis of the Satya, truth क्या है? Is paramount in the writing of the Indian philosopher. Satya नास्ति परोधर्मति, मतलब सत्य नास्ति परो धर्मति. देयर इज नो रिलीजन और ड्यूटी ग्रेटर देन द ट्रुथ. होल्ड्स अ प्रोमिनेंट प्लेस इन हिंदुइज्म. सी, सत्य नास्ति परो धर्मस्ति. ऐसा कोई रिलीजन नहीं है और ड्यूटी ग्रेटर देन ट्रुथ, जो सच्चाई से बढ़कर है. और ये जो सच्चाई है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. इट होल्ड्स अ prominent place in Hinduism. Reaching pure and absolute truth is attaining moksha. See, reaching pure and absolute truth is attaining moksha. See, सच बोलना, अपना मन शुद्ध रखना, ये एक सच्चाई है ताकि आप मोक्षा अटेंड कर सको. गांधी holds that truth is God and maintains that it is an integral part of सत्याग्रह. See, गांधी जी क्या कर रहे हैं? गांधी होल्ड्स दैट ट्रुथ. गांधी जी ने ट्रुथ को हमेशा समझा है और बोला है सच्चाई ही भगवान है. एंड ही मेंटेन्ड इन दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ सत्याग्रह. और वो सत्याग्रह में ये उन्होंने बोल के रखा है और बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि सच की राह चुनो, मन से सच रहो, अच्छे से सच्चाई का ध्यान रखो, अच्छे से सही के राह पे चलो, आपको भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे. ही एक्सप्लेन्स इट thus
अब उन्होंने ये अच्छे से एक्सप्लेन कैसे किया है। द वर्ल्ड रेस्ट अपॉन द बेडरॉक ऑफ सत्या और ट्रुथ। आस्था मीन्स अनट्रुथ ऑल्सो मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस, एंड सत्य और ट्रुथ मीन्स दैट विच इज ऑफ अनट्रुथ डज नॉट गो मस्ट एग्जिस्ट। सी, अब वर्ल्ड किस पे है? द वर्ल्ड रेस्ट अपॉन द बेडरॉक ऑफ सत्या और ट्रुथ। वर्ल्ड किस पे खड़ा है अपना आज? सत्य पे खड़ा है। आस्था, सत्य मतलब ट्रुथ। आस्था मीन्स अनट्रुथ ऑल्सो मीन्स नॉन वायलेंस। आस्था मीन्स अनट्रुथ। अनट्रुथ का मीनिंग क्या है यहाँ पे? अनट्रुथ मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस, एंड सत्य और ट्रुथ मीन्स दैट विच इज ऑफ untruth does not so much exist. Its victory is out of the question. और इसका विक्ट्री क्या है? आउट ऑफ क्वेश्चन है। एंड ट्रूथ बिगिंस दैट विच इज, एंड ट्रूथ बिगिंस दैट विच इज कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। और सी, सच्चाई अपन कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? सच्चाई कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। सच का अपन कभी भी नाश नहीं कर सकते। दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह इन अ नटशेल। सी, ये सत्याग्रह का क्या है? एक नटशेल। इट इज़ डॉक्ट्राइन। ये सत्याग्रह का एक सच है और ये नटशेल की तरह है। नटशेल में क्या? नारियल, आपको पता है नारियल अखरोट कैसे है? बाहर से हार्ड है बट अंदर से सॉफ्ट है। उसी तरह सच्चाई को यहाँ पे बोला है। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अहिंसा, नॉन वायलेंस। In Gandhi's सत्याग्रह, truth is inseparable from अहिंसा। सी, गांधी जी के सत्याग्रह में क्या है? ट्रुथ इज अनसेपरेबल फ्रॉम अहिंसा। ठीक है मम्मा। अहिंसा एक्सप्रेसेस एज एंशंट हिंदू। अहिंसा क्या है? एक्सप्रेसेस एज एंशंट हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट इथिकल पर्सपेक्ट। यहाँ पे क्या बोला है? इन गांधीयन सत्याग्रह ट्रुथ क्या है? ट्रुथ इज इनसेपरेबल फ्रॉम अहिंसा। अहिंसा और ट्रुथ दोनों साथ में चलते हैं। अहिंसा एक्सप्रेसेस एज एंशंट हिंदू। अहिंसा को अपन कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड एज एन एंशंट हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट इथिकल पर्सपेक्ट। देन the negative prefix a plus ahimsa meaning injures make up the word normally translated non-violence. See, the negative prefix a plus ahimsa, negative persist plus ahimsa meaning injures make up the word normally translated non-violence. The term यहाँ पे क्या बोला है? द टर्म अहिंसा appears in Hindu teaching as early as the चंदोया उपनिषद। से, जो टर्म अहिंसा हिंदू टीचिंग में कब से है? जब से ये चंदोया उपनिषद से। द जैन रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट अहिंसा एज द फर्स्ट रूल। जो ये जो जैन रिलीजन है, दे कॉन्स्टिट्यूट अहिंसा एज द फर्स्ट रूल। इट इज़ अ कार्डिनल वर्चू इन बुद्धिज्म। ये क्या है? ये कार्डिनल वर्चू इन बुद्धिज्म है। डिस्पाइट इज बीइंग रूटेड इन दिस रिलीजन, द स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी वॉज टू मेक द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा मीनिंगफुल इन सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर बाय मोल्डिंग टूल्स फॉर नॉन वायलेंट एक्शन टू यूज एज अ पॉजिटिव फोर्स इन सर्च फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रुथ। डिस्पाइट इट्स बीइंग रूटेड इन द रिलीजन, से भले ही वो रिलीजन में वगैरह है, फिर भी स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी का एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन था। और वो कंट्रीब्यूशन क्या था? टू मेक द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा मीनिंगफुल। ये जो कंसेप्ट ऑफ अहिंसा है उसको अच्छे से मीनिंगफुल बनाना है इन सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर में। कैसे बनाएंगे? ये टूल्स फॉर, अपने को ऐसा मोल्ड करना है कि इट बिकम्स वन ऑफ द टूल्स फॉर नॉन वायलेंट एक्शन, ताकि अपन यूज़ कर सके इन अ पॉजिटिव फोर्स इन सर्च ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रस्ट।
Gandhi formed ahimsa into the active social technique which was to challenge political authorities and religion's orthodoxy. See, Gandhi formed ahimsa into an active social technique. See, गांधी जी ने अहिंसा क्या कैसे फॉर्म किया? into an active social technique which was to challenge political authority and religion orthodoxy. See, it is worth noting that this active social technique which was to challenge political authority used by Gandhi is none other than सत्याग्रह. See, it is worth noting that ये जो active social technique है which was to challenge political authority used by Gandhi ji, it is none other than सत्याग्रह. Truly enough, the Indian million was already influenced with notion of ahimsa. See, truly enough की क्या जाए, the Indian मालूम से क्या, they were already influenced with the notion of ahimsa. Nevertheless, Gandhi acknowledged that it was an essential part of his experiments with the truth, whose technique of action he called satyagraha. Nevertheless क्या है, Gandhi acknowledged that it was an essential part of his experiment with the truth. गांधी जी क्या बोलते हैं, ये it was an essential part of the experience with the truth, those technique of action he called satyagraha. Truth, peace, rightness and non-violence, satya, shanti, dharma and ahimsa do not exist separately. See, truth, peace, rightfulness, non-violence, सत्य, शांति, धर्म, अहिंसा, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक है और ये सब एक साथ एग्जिस्ट होते हैं. दे आर ऑल इसेंशियली डिपेंडेंट ऑन लव. सी, अब ये सारे किस पे डिपेंडेंट है? दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन लव. व्हेन लव एंटर्स द थॉट इट बिकम्स ट्रुथ. सी, व्हेन लव एंटर्स द थॉट्स इट बिकम्स ट्रुथ. When love enters the thought, it becomes truth. When it manifests itself in the form of action, it becomes truth. When it manifests itself in the form of action, it becomes truth. When love manifests itself in the form of action, it becomes dharma or rightness. See, अब love खुद में ही अच्छे से काम करने लगे तो it becomes dharma or religiousness. When you feel become saturated with love, you become peace itself. When your feeling becomes saturated with love. See, जब आपकी फीलिंग में सिर्फ प्यार रहेगा तो क्या है, आप एकदम शांति से जी पाओगे. इट मीन्स यू विल हैव अ पीसफुल लाइफ. The very meaning of the word peace is love. See, the meaning of word peace is love. See, peace का meaning क्या है? Love. When you feel your understanding with love, it is ahimsa. See, जब आपका feeling, when you feel your understanding, आपके अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ आपका प्यार रहेगा, आपके मन में कोई फीलिंग नहीं रहेगी, सिर्फ प्यार की फीलिंग रहेगी, तब अपन उसको क्या बोलते हैं? अहिंसा. प्रैक्टिसिंग लव इज धर्मा, थिंकिंग ऑफ लव इज सत्य, फीलिंग लव इज शांति एंड अंडरस्टैंडिंग लव इज अहिंसा. सी, लव प्रैक्टिस करना, अपने जीवन में सबके प्रति प्यार रखना, इसको अपन बोल रहे हैं धर्मा. राइट. थिंकिंग ऑफ लव, सिर्फ प्यार के बारे में सोचना, इज सत्य. फीलिंग लव इज शांति एंड अंडरस्टैंडिंग लव इज अहिंसा. फॉर ऑल दिस वैल्यू इट इज़ लव विच फ्लोज एट द करंट अंडर करंट. फॉर ऑल दिस वैल्यू क्या है? इट इज़ लव विच फ्लोज एज एन अंडर करंट. Then the next point is the tapasya, that is the self-suffering. It remains a truism that the classical logic law of self-resistance and self-discipline are familiar element in Indian culture. See, it remains a truism. ये बात सच्ची है कि पापा अपने यहाँ पे योगी लॉ ऑफ सेल्फ रेजिस्टेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर फैमिलियर एलिमेंट्स इन इंडियन कल्चर. अपने इंडियन कल्चर में क्या है? अपन खुद डिसिप्लिन रहे, अपन सब कुछ अच्छे से काम करें, अपन सब एक सेल्फ रिस्ट्रेंट से काम, खुद को गलत काम करने से रोक के, ये सब क्या है? ये सब अपने इंडियन कल्चर में
अपन बच्चों को सिखाते हैं, कराते हैं, राइट। सेल्फ सफरिंग इन सत्याग्रह इज टेस्ट ऑफ लव। सेल्फ सफरिंग इन सत्याग्रह क्या है? इट इज द टेस्ट ऑफ लव। सेल्फ सफरिंग इन सत्याग्रह इज अ टेस्ट ऑफ लव. It is dedicated first of all towards the much persuaded of one whom is undertaken. See, it is detected first of all towards the. अब ये किसके ऊपर ज़्यादा डिटेक्टेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल टूवर्ड्स द मच परसुएडेड ऑफ वन होम इज अंडरटेकन. जिसके साथ होता है, जिससे अपन अंडरटेक करते हैं, क्या सिचुएशन है, उस पर सारा डिपेंड करता है. गांधी डिस्टिंग्विश्ड सेल्फ सफरिंग फ्रॉम कोवर्डाइज. गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी ने डिस्टिंग्विश किया है सेल्फ सफरिंग फ्रॉम कोवर्डाइज. दोनों में एक अंतर रखा है. वो क्या है? कोवर्डाइज यानी कौन? जो मतलब डरपोक रहते हैं. किधर झगड़ा चल रहा है तो क्या करते हैं? वो अपनी राह बदल देते हैं, राइट. किसी के बहस में नहीं जाते, किसी के साथ बहस नहीं करना, उनको अपन कोवर्डाइज बोलते हैं. तो क्या है? गांधी जी डिस्टिंग्विश करते हैं सेल्फ सफरिंग फ्रॉम कोवर्डाइज, ऐसे लोगों के साथ, और सेल्फ सफरिंग, इन दोनों में गांधी जी फर्क करते हैं. गांधीज चॉइस ऑफ सेल्फ सफरिंग डज नॉट मीन दैट ही वैल्यूड लाइफ लो. सी, गांधीज चॉइस ऑफ सेल्फ सफरिंग डज नॉट मीन दैट he valued life low. He is rather a sign of voluntary help, and it is noble and morally enriching. See, Gandhi's choice of self-suffering does not mean that he valued life low. It is ये क्या है? ये एक sign है of voluntary help, and it is noble and morally enriching. See, it is rather a sign of voluntary help, and it is noble and morally enriches it. It is not because I value life low I can countenance with joy thousands volunteer losing their life for सत्याग्रह. See, it is not because मैं लाइफ को दूसरों की ज़िंदगी लेना, तो कितने तो लोग अपनी लाइफ बताना, अपनी जान गंवाना सत्याग्रह के लिए, उसके लिए नहीं, but because I know that it results in long run in the least loss of life. बिकॉज क्या है? आई नो दैट इट रिजल्ट्स इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ये आगे जाके लॉन्ग टर्म के बारे में अगर सोचो तो क्या है, आगे का बहुत ज़्यादा सोचो तो क्या है, यहाँ पे जो मरने का, लॉस ऑफ लाइफ का क्या है, कम से कम खतरा होगा. एंड व्हाट इज़ मोर, इट एनोबल्स दोज हु लूज देयर लाइफ एंड मॉरली एनरिच द वर्ल्ड फॉर देयर सेक्रीफाइस. और एक अच्छी बात क्या है, जो लोग अपनी लाइफ गंवा देते हैं वो क्या है, उनकी लाइफ गंवाना वेस्ट नहीं होगा. इट वुड सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड कि बाबा इसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की ये चीज़ के लिए. एज सत्याग्रह इज एज इट बेस्ट व्हेन प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस्ड बाय दोज हु वुड यूज आर्म्स बट डिसाइडेड इंस्टेड टू इनवाइट सफरिंग अपॉन देम. सत्याग्रह एट इट्स बेस्ट क्या है? जब अपन प्रीच करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बाय दोज हु वुड यूज आर्म्स बट decided instead to invite suffering upon them. Then it is not easy for the Western mind or non-oriental philosopher to understand the issue of self-suffering. See, ये self suffering का जो मैटर है ये समझना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जिनका माइंड वेस्टर्न माइंड यानी क्या, जो फॉरेन कल्चर ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, हाँ, जो बहुत ज़्यादा फिलोसोफर में बिलीव नहीं करते, उनके लिए ये सेल्फ सफरिंग समझना, ये कंसेप्ट समझना मुश्किल है. इनफैक्ट इन सत्याग्रह द एलिमेंट ऑफ सेल्फ सफरिंग इज परहैप्स द लीस्ट एक्सेप्टेबल टू द वेस्टर्न माइंड. इनफैक्ट इन सत्याग्रह द एलिमेंट ऑफ सेल्फ सफरिंग इज परहैप्स द लीस्ट एक्सेप्टेबल टू अ वेस्टर्न माइंड. Yet such sacrifice may well provide the ultimate means of realizing that characteristics so imminent in Christian religion and Western moral philosophy. See, yet ये जो sacrifice है, it will provide the ultimate means of realizing that characteristics of imminent in Christian religion and Western moral philosophy. The dignity of the individual. The three elements, Satya, Ahimsa, Tapasya, must move together
फॉर द सक्सेस ऑफ एनी सत्याग्रह कैंपेन। से अभी जो 3 एलिमेंट की अपन ने बात की अभी, जैसे कि 3 एलिमेंट कौन से हैं यहाँ पे, अहिंसा, सत्य, सत्य, अहिंसा एंड तपस्या, ये तीनों साथ में ही जाने चाहिए, तब भी आपका सत्याग्रह कैंपेन सक्सेसफुल होगा। इट फॉलोज दैट अहिंसा मस्ट इम्प्लाई लव लीड्स इन टर्न टू सोशल सर्विस। इट फॉलोज दैट अहिंसा विल इम्प्लाई, अहिंसा से क्या, प्यार मिलेगा, दैट ये अपने को सोशल सर्विस के लिए काम आएगा। ट्रुथ लीड्स टू एन इथिकल ह्यूमैनिज्म। ट्रुथ क्या है, ट्रुथ वुड लीड टू एन इथिकल ह्यूमैनिज्म। सेल्फ सफरिंग not for its own sake but for the demonstration of sincerity flowing from refusal to injure the opponent while at the same time holding to the truth implies sacrifice and preparation for sacrifice even to death. See, truth leads to an ethical humanism. Self suffering क्या है, not only for its own sake but for the demonstration of sincerity flowing from refusal to injure the opponent while at the same time holding to the truth implies sacrifice and preparation for sacrifice even after death. We'll wind up of the lecture here. In next lecture, we'll study the concept of Sarvodaya. You can read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.